Now let's keep the energy high as we move on the final round of our exciting quiz. I request CA Sumit Bihani and CA Shyam Agrawal to take the stage and guide us through the quiz. So last announcement for the crossword. Those who have submitted the crossword, it's fine. So we are waiting for 5 more minutes. Please submit the crossword. After that, it will be freezed. Hello. Hi. So you have all are in the WhatsApp group, right? Those who are in the WhatsApp group, we have sent a link and the QR code. Those who are not there, they can just scan the QR code from here and join the quiz. Please enter your full name while joining. Amit Bhaiya. And the crossword box is right there on the right side. Those who want to put in their answers, they can send it there. So last and final call for crossword because उसके बाद उसकी checking होगी, evaluation होगा और उसके बाद prizes है. And the prizes are really good. So believe me, this I don't want you to feel that कि आपसे opportunity miss हो गई. But make sure you are present. If you go, you will not get the prizes. Correct. No Assignment of office is not possible. खुद को claim करना पड़ेगा आपको वहाँ पे खड़े होके. So are we ready with the prizes? Anybody So I think still willing to log in? 37 people have joined. Anybody has any problem, they can raise their hand. Anybody having any issue? So we are good, I think. Sumit, at the count of 5, we'll start this. So quiz. what happens is, I'll just explain. There are 2 rounds we'll take. First round, we'll have capital market and artificial intelligence questions. 10 questions round, 20 seconds for each question. So the questions will be displayed here also on your screen. You just have to enter the right answer and press on the submit button. So you will get 20 seconds, and once the 10 questions are over, we'll show the leaderboard and the prizes will be given to the top 4 answers. So 2 aspects to win. One is correctness and second is timeliness. So fastest finger fast. So it's like KBC fastest finger first. In case कोई बाहर है तो please उनको बुला लीजिए because we'll start. Anybody, all can participate. All members can participate. You can, all of us. All of us can participate. यहाँ कोई भी नहीं है जो नहीं कर सकता है. Anyone and everyone can participate. Just to inform, किसी भी ऑफिस खाली मेरे को सुमित को छोड़ के किसी के पास आंसर्स नहीं है. Even मेरे पास भी बहुत ज़्यादा नहीं है. श्याम ने बनाया पूरा. अगर बाहर कोई है लोग प्लीज आ जाइए. We can start. They can just join. स्लाइडो भैया स्कैन इसको स्कैन भैया you can scan from here. भैया ये स्कैन कर लीजिए गूगल लेंस पे जाके यहाँ पे. So we have 59 participants as of now. सुमित, बसंत जी एक बार सुमित के पास चले आइए. He'll help you out. We'll start in the next 30 seconds. Hope everyone has joined. So आपको गूगल लेंस पे जाके ये QR को क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास URL खुल जाएगा. Because we are done. So once you have logged in, you have to write your name. Please write your name and then join. So we are good to go. Sumit, done. Question will come. अभी आएगा, अभी आया नहीं है. हाँ बस अपने आप अभी आएगा, अब आएगा, अपने आप आएगा. सुमित, I think we can. हाँ, good to go. आ गया पे. एक सेकंड भैया. विकास, आप सॉरी अपना नाम डाल दीजिए. Sorry. Join. So Sumit, first question. First question, we'll just start. So here it is, the first question. Which exchange became India's first carbon neutral exchange in 2025? So BSC सेकंड का टाइम है और आपके मोबाइल पे भी स्क्रीन अवेलेबल है. BSC, NSE, MCX और NCDX. So we have 19 answers, 29, 5 seconds to go. 40 answers, and the time is up. So next question, please. So now, let's see how many have answered. So we have 30% the maximum with MCX. So let's see what is the right answer. And the right answer is BSC. BSC. So Sumit, before you proceed to the next question, if you can zoom out, zoom. नहीं, उधर left में दिख रहा है. अच्छा, left right दिख रहा है. छोड़ दे, Left, Sumit, right छोड़ दे. Done. चलो.
So we'll move on to the next question fast. Second question. SEBI introduced T plus what settlement cycle for the equity trades in 2025? So One T plus. T plus क्या होना चाहिए? Fill in the blanks. T plus 1, 2, 3, 0. 10 seconds to go. So president भी खेल सकते थे. President is busy, I guess. Okay, let's see. So T plus 1 के लिए maximum आया 60%. So जनता की राय सही है कि गलत, सुमित? Let's see. Correct. सही है. Yes, sir. बढ़िया नहीं सर, यहाँ 2% वाला नहीं है. So next question, please. Next question. Let's go to the third question. Who is the current chairperson of SEBI? पहला वाला देखा नाम लग रहा है मेरे को. माधवी पुरी बुच, अजय त्यागी जी, अश्विनी भाटिया जी और यूके सिन्हा जी. 10 seconds. काफी इजी लग रहे होंगे क्वेश्चंस. श्याम ने बोला कि सबको जिताना है इसलिए इजी क्वेश्चंस कर लिए हैं. So it is not only about easy questions, it's about how fast you give the answers. So जनता की राय थोड़ी मिक्स है. 33, 35. So the right answer is answer number A. Sir, करेक्ट है. 2024 अभी करंट चेंज हो गया. राइट, वो आंसर गलत हो गया. So can we? चलो, we'll go next. चलो, कोई नहीं. Rare. So what is the new daily circuit limit set by SEBI for stocks? 5%, 10%, 15%, 20%. Five seconds. So 5% is the right answer. देखिए ऐसा सही है क्या? ऐसा सही है क्या? जनता की राय 58% आंसर बताइए कंप्यूटर साहब. 10%, 23, 10%. 10% is the right answer. So next, please. So last question with respect to capital market. Which sector witnessed maximum IPOs in 2025? टेक्नोलॉजी, फार्मा, रियल एस्टेट, रिन्यूएबल एनर्जी. मतलब 24, 25 का अपने बात कर रहे हैं. 25 तो अभी चल ही रहा है. Financial year. 24, 25. Which sector has the maximum IPOs? तुमको पूछना चाहिए था किसमें सबसे ज्यादा पैसे बने तो लोग शायद ज्यादा अच्छा आंसर देते हैं. And the C, 38% with technology, 52% renewable. And the right answer is technology has more number of IPOs than renewable energy. So sector अच्छा है renewable energy, but technology में ज़्यादा IPOs आए हैं. Correct. So 5 questions for capital were completed. Now we move on to AI. Correct. So AI पे टाइम लगाइए AI के साथ. So CIA stands Next. for. What is the acronym for CIA? CIA का full form क्या है? मेरे को तो लगा ये यूएस की कोई एजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. यहां देखते हैं किसका आंसर सही होता है. So we have 50 answers coming in. 58, 65, 66, mixed 23, 27, 17, 33. So 33 is again the leader, I presume. Sumit. ऑथराइजेशन नहीं होगा, अवेलेबिलिटी होगा. सो CIA का ऑप्शन A was the right answer. Availability is constrained. Next question, please. In cloud computing, what does IaaS stand for? So जिन्होंने अभी क्लास करी होगी AICA वाली फटाक से आंसर आ जाएगा. सर आंसर अच्छा द्विपंदा है. Let's see what is internet infrastructure integration or information. And the audience goes with infrastructure. So which I presume is right. Right answer. चलिए, the Janta Janardhan is right with 38%. Great. 3 more questions to go. Number 8. Which cloud computing model offers software applications over the internet on subscription basis? So software application is the key word. आस पास सास नास. देखिए क्या आंसर राइट होता है. So जिन्होंने on a lighter note बोला is actually right. So on a lighter note, it is right.
79% has gone with the correct answer. Great. So last, ninth question. What is two-factor authentication? जो आप Gmail पे यूज करते हैं या इवन इंटरनेट बैंकिंग पे यूज करते हैं. Using two usernames. नहीं नहीं. गलत आएगा, गलत. गलत भी आएगा. इसमें चारों में आएगा आंसर, देखना. सो देखते हैं जनता जनार्दन क्या कहना चाहती है. 1%, 75, 24. तीन में आया आंसर. तो सबका तो नहीं आया, लेकिन मेजॉरिटी प्रॉब्ली इज करेक्ट. Majority is containing right. चलो. Great. Combination of password with second Form of verification. So Next last question. Which technology allows multiple users to access work on financial data simultaneously from different locations? कौन सी तरकीब होती है ये? ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग. सो टेक्नोलॉजी के आईपीओ इसीलिए ज्यादा आ रहे हैं मेरे को लगता है, बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस. So we are also imbibing AI in our practice. Let's see. Cloud computing. I believe most of the Janta is right, and the right answer was So this. can we quickly have the leaderboard? So again, we have one more quiz left. Let's see the leaderboard for the first. So we'll give top 4 answers. I request to Pradeep Jain ji, please come forward and. So can we call first? Sumit, 4? 4. So first we'll call Ekta Jaipuria. Is she there? Ma'am, please. Ma'am. Followed by Abhishek Agarwal. Abhishek Agarwal. Thank you, sir. Can we have Siddharth. Siddharth sir, please, to Join please us join us for the no. prizes. Vikash. And finally, Ms. Surbhi Pal. So I request Siddharth to just stay on once. Sir, Vikash Mehrotra. Vikash Mehrotra tha, sir. So Surbhi was first. Surbhi, yeah. Surbhi, please. Sorry, Shyam. Surbhi is first, right? Yeah, Surbhi is first. So congratulations, Surbhi, for the maximum number of correct answers. A big round of applause for Surbhi, please. Thank you so much, sir. Moving on, we have next set of questions. Set of questions. So probably a new QR to scan, और कैसे login करेंगे? एक बार नया presentation चालू करते हैं. Let's see if everybody is joined. I'll call you next. I request everyone to please rejoin. जो ऐप में है. So how many have joined? 28. 28. 33. Same link. So we are able to continue on the same link. So we'll wait for 10 more seconds. Chalo, we can start, Sumit. So we'll have questions on income tax now.
income tax and GST or only income Only tax? income tax. Oh my god. 10 questions on income tax purely. So Manish भैया GST का Session नहीं मिला सर थे. GST वाला. So we are now 77 plus people. I think we can start, Yes, right? We can start. We can start. So first question: how can AI assist in preparing Financial financial statement. statements? I think AI वाला ही आ गया क्या ये? हाँ तो AI वाला ही है. So let's do it. Let's do it. AI वाला ही है. ठीक है, done. AI के ऊपर ही है. इसी को रखो. भाई मैनुअली एंटरिंग डेटा ही होगा मेरे को लगता है. By automating data aggregation and reconciliation. So audience is right or wrong, Sumit? Let's see. 96%. एकदम right. So Correct. Janta is correct. Janta is correct. And there was a movie Maximum called. right answers. So there was a movie called Karthik Calling Karthik. So whenever I am calling Sumit, so there's another gentleman sitting there called Sumit Bhagat. So don't confuse कि मैं अपने आप को बुला रहा हूँ. So next question please. So all are on AI only. Okay, no AI worries. only. चलो. What is a neural network? आज ही बताया था उन्होंने न्यूरल नेटवर्क के बारे में. Physical network, tax calculation algo, model inspired by human brain या a type of accounting software. 9 seconds. मेरे को तो पहला वाला ही लग रहा है, टिक कर देता हूँ. सर ने क्या बताया वही बात है. कंफ्यूज कर रहा हूँ. आंसर तो दे चुके अभी तक. 78% goes with option C. So is it the right answer? Let's see. Correct. Correct. Janata Janardhan is right always. So next question. Next. Which accounting task is least likely to be automated by AI? Data entry, creative tax planning, invoice processing या ledger reconciliation? फिर 1 पे A पे टिक कर देते हैं अपन. कौन सा काम है जो AI सबसे कम ऑटोमेट कर सकता है? सबसे कम ऑटोमेट. So people have gone with 68% creative tax planning. So Sumit is the right answer? Correct. Correct. So जैसे सर ने बताया था, human intelligence cannot be replaced by the artificial intelligence. This was the answer. So how are you liking, guys? No reaction. सिर्फ स्क्रीन पे सबकी आंखें लगी हुई है. So let's go to the next question. Fastest finger first. चलिए. Next question. How can AI improve the audit process? By reducing the need for audits, replacing human auditors, ignoring compliance requirements, or identifying anomalies in real time? अभी तक जनता जनार्दन, I think all the questions were with the majority. So अगर ये majority है तो इसमें fastest finger first भी बहुत important हो जाएगा. Right. 95% option D. So I think our previous session was successful भैया because answers probably Majority में आ रहे हैं. AI वाला session सबको अच्छा लगा. And that's the correct answer also. Great. Can we go to the next question please? What RPA का full form. RPA stands for Revenue related होगा कि robotic? नहीं, regulatory भी तो हो रेगुलेशन सकता है. परफॉर्मेंस असेसमेंट ही लग रहा है. Regulatory भी हो सकता है. हम जो बोल रहे हैं वो तो शायद नहीं होगा. वी आर ट्राइंग टू ब्लफ. Let's see if somebody that takes the bluff. And the majority has gone with option C. Correct. अच्छा, नहीं regulatory भी है. 17% है regulatory. Okay, so 68% majority was the correct answer. Great. So we are halfway through the quiz. More 5 questions to go. Next question, please, Sumit. Which financial metric can AI predict with high accuracy? इसमें से कौन सा financial metric AI सबसे अच्छा predict करता है? सारे ही सही लग रहे हैं मेरे को तो. नहीं, अभी सर ने कैपिटल मार्केट लिया तो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट्स पता चलेगा कौन सा सही ऑप्शन है. कैश फ्लो ट्रेंड्स 80%. सो क्या जनता जनार्दन सही सोच रही है? अमेजिंग. सो कैश इज द किंग, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सो एआई रिलेटेड सारे क्वेश्चंस में बहुमत मिल रहा है. व्हाट डज एआई, हाउ डज एआई एनहांस द टैक्स कंप्लायंस? बाय इंक्रीजिंग टैक्स इवेजन.
By replacing tax authorities. ये भी by option हो eliminating सकता है. tax filing. Faceless हो गया ना? या फिर लास्ट वाला by automating tax code updates and calculation. 95%. Option D. And the correct answer is? जनता जनार्दन फिर से सही. Always right. Not सारा always. questions right. So next question please Sumit. Next question. What is predictive analysis? मतलब बाजार आगे कैसे चलने वाला है वो बताएंगे हम. सर अभी बता रहे थे के कैसे through. बाजार जाएगा आगे. देखिए इतना अच्छा आपको आंसर का हिंट दे दिया मैंने. बट मेरे को अभी लग रहा है इग्नोरिंग हिस्टोरिकल डेटा की कैलकुलेशन ऑफ करंट प्रॉफिट्स. पुरानी बातों भूल जाओ, इग्नोर करो. 97%. अभी तक का 98 शायद हाईएस्ट गया था. सो ये सर कैपिटल मार्केट की भी सक्सेस हो सकती है. आपने फोरकास्ट के बारे में बताया कि बाजार आगे का भाव को प्रेडिक्ट करके चलता है. सो करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इज अमेजिंग. 7% राइट. ग्रेट ऑडियंस. सो वी हैव 2 more questions. एक बार लीडर बोर्ड दिखा सकते हैं इन बिटवीन? नहीं, can't. चलो. चलो. So we are going with the 9th question of the day. What is a chatbot? ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज आप एआई के साथ मिक्स मत कीजिएगा इसको. व्हाट इज अ चैटबॉट इज अ क्वेश्चन. इट इज नॉट व्हाट इज एआई चैटबॉट. AI chatbot अलग होता है, सिर्फ chatbot अलग होता है. और शायद इस बार मैं सही भी बोल रहा हूं तो मेरे को सीरियसली लीजिएगा. We have a split answer, I guess, in this one. We have 80% majority. इसीलिए मैंने आपको पहले बताया लेकिन आपने मुझे 80% seriously नहीं लिया. So देखिए- you know the right answer. So this answer probably will change the game. Okay. Correct. AI powered tool for client queries. So the last question. And the last question of the day. Quiz का last question of the day. How can AI improve financial forecasting? By guessing. My God. By ignoring. Guess. By Ignore. increasing or by using historical data and trends. थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आई गेस इसमें भी मेजोरिटी आना चाहिए आंसर्स का. लाइक ऑल द पास्ट 9 क्वेश्चंस, दिस विल आल्सो हैव मेजोरिटी. %95. I guess maximum questions were 90+%. So before we show the answer, I would request all of you to give a round of applause for all of you because बहुत अच्छा खेला आपने audience. So सुमित सही Thank answer you so बताइए. much for participating, and the right answer is 95% option D. Correct. So let's see the leaderboard. ये किसने जीता है? So at a count of 1, 2, 3. I request here Rajesh Singhania ji to come forward. Okay. So we have Parag, number 4. Come on, So can we Parag. keep the leaderboard on? या leaderboard दिखाते रहो. For distributing the prize. आइए भैया. राजेश भी आइए. So 10 on 10. आप एक चीज देखो, पांचों जन ने 10 on 10 राइट किया है, बट 58 seconds, 1 minute 6 seconds टाइमिंग का डिफरेंस है खाली. अदरवाइज ऑल 10 on 10 वर राइट. So we have Gaurav Agarwal next. Gaurav Agarwal, आइए गौरव जी. So these are basically Congratulations, Gaurav. Rohit, next. Then we have Harshit Agarwal. Please come, Harshit, on stage. I request here Rajesh Singhania to come forward. And the Now first we'll- prize goes to अरे The ये तो one and related- only. भैया ये तो The one related and party हो only. गया. A18 party. आज पार्टी जल्दी होगा. Congratulations, Swapnil Jain, for coming number 1. Congratulations, It has to be Swapnil. correct and fast. Right. स्वप्निल अब केबीसी ट्राई करेगा.